So, hey guys, welcome back. Is there anyone in the live chat? Mm, Let me just set up a few things and we will start. Mm, Okay, this is it. This is our motion. Mm, I'm not live. Wait, okay, we are live. So, hey guys. If it's this. hmm, Hey bro, Vishal Maurya, welcome back to our stream. Mm, I think I need to fix this. So we are live. Hey bro, Vishal Maurya, welcome back to our stream. Okay, so it is connected now. And now we are live. I hope everything is working fine now. Guys, Vishal, is there any logo on my face? मतलब मेरे वेबकैम के ऊपर कोई लोगो तो नहीं दिख रहा है ना? We will we will begin shortly. Okay, then it is completely fine. We should start our stream for today. And today is day number 17, and we need to do one thing. What? List the problems that we are going to solve today. Let's say mm, the first problem. Check. So, how are you, Vishal? How are you doing? How was your day? तुम अपने दिन के बारे में बताओ, तब तक मैं ये प्रॉब्लम्स का लिस्ट कर देता हूँ जो आज हम सॉल्व करेंगे. और उसके बाद we will start solving the problems, right? So, ag- aggressive cows and then book allocation problem, book allocation problem, and then split array, largest sum, largest sum, and then painter's partition problem, and then minimize maximum distance to gas station. Nice. Distance, maximum distance to gas station. So hey guys, welcome. If you guys are new here, my name is Harshit Thakur and I'm a final BTech undergrad. I had started this channel
challenge. Sorry. I started this challenge to be consistent and build a habit of coding regularly. Vishal is saying डे अच्छा नहीं था विजडम लैब कंपनी आई थी सब सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ लिया पैकेज कितने का था विशाल विजडम लैब का आई टोल्ड यू डिपेंडिंग अपॉन लाइक इट डिपेंड्स ऑन एवरी कंपनी के लाइक वो कैसे क्वेश्चंस पूछेगी नहीं नहीं maximum distance to gas station medium of two sorted median of two sorted array and then kth element of two sorted kth element of two sorted array. Okay, so total of 8 problems we have to. Darshan is saying, bro, are you working, bro? I am not working, I am studying. I myself is learning right now. Mm, I'm preparing for placements, upskilling myself to get better opportunities in future, right? So we are pushing through. And you can join us too if you are not consistent on coding. We can build accountability together. And please don't mind my communication skills. I am trying to improve them as well on the go. So let's get started. Guys, today we will try to solve these 8 problems. These are like a little difficult problems. Okay, where is it? Yeah, most of them are, 6 of them are hard level problems, right? So it will take time. We will stay. Darshan is saying, okay, bro. And where are you from, Darshan? Which year you are? Are you preparing for jobs or already working out in any company? Tell us about yourself as well. So let's start. I hope my screens are visible. VS Code and my browser screen. Here it is. I hope it is visible now. कल ये वाला प्रॉब्लम रह गया था जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ था तो आज हम फिर से इसको ट्राई करेंगे मिनिमम डेज टू मेक एंड बुकेट्स 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 दर्शन वेयर आर यू देयर so I forgot the problem what it was. Okay, we are given an integer array bloom day an integer m and integer k and you want to make m buckets. To make a bucket you need to use k adjacent flowers. Mm, okay, from the garden. The garden consists of n flowers. Each flower will bloom in bloom day I, then can be used in exactly one bucket. Okay. I was asking Darshan ke in which year you are, what are you preparing for? Are you preparing for job or you are already working in a company? And can you review our channel and our challenge? How we are doing? Is it helping you out in any way? Your feedback really matters. We will try to improve on the things that you will say are not going right. Mm, s- Okay. Please look. Okay.
Okay. So people are coming and going. I should start solving problems and disconnect. Why is it getting disconnected? Yeah. Reconnection successful. Three. What the heck? Vishal, you are saying that कंपनी वर्डप्रेस पे काम करते हैं और 3 LPA का पैकेज है और सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस पूछ के गए. दिस इज वेरी अनफेयर. इट इज सिमिलर लाइक मतलब इन्फोसिस का भी हेड विद इन्फी का टेस्ट हुआ था तो उसमें सारे के सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि वो चैट जीपीटी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था. Yet some people got selected from my college. They are having their interviews going on. दर्शन तुमने जवाब नहीं दिया मैं क्या पूछ रहा था तुमसे. VS Code theme name, bro, I don't remember, I forgot. Extensions. Where can I check कि कौन सा थीम यूज कर रहा हूँ मैं अभी. ये था फिग्मा. नहीं, ये गिटहब थीम यूज कर रहा हूँ. गिटहब थीम. दर्शन आर यू देयर? आई वाज आस्किंग समथिंग यार. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. So let's back to the problem. हम्म. इसमें बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे हम. और we need to find minimum number of ways to make on buckets, and each bucket we need k adjacent flowers. K is the okay, and the garden consists some flowers and a bloom day. So each here. So the first flower will take 1 day to bloom. Second flowers will take 10 days. N is equals to 3. Then we need to identify. How to solve tricky problems. Mm, how can we understand the problem? Bro, more than 400 people every day are seeing your video. How do you know, Vishal? Mm, I know more than 400 people are seeing my videos. Okay, good. Uh, Let's forget about code for a minute. Imagine you are a factory manager. Mm, specific,
So, I know that run and it's a I did actually. So, okay, can we make hand buckets? Mm, we need to okay. Um, so the possible answer will be lying from 1 to 10. And we will check if on day 5 we can make hand buckets. That is true. It is, yes, like in 5 days we can make three buckets. Okay, bro, we will be here only. तब तक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आई गेस. हाँ तो आंसर स्पेस क्या है 1 से लेके 10 तक. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट वी नीड इज like we don't need but that is possible is 10. Like at max it can take 10 days. Okay, and the minimum number of days 1. We need to compare and find out the minimum number of day to make three bouquets, right? So, so, so we will like take the minimum of this array that will be the start of our search space and mm, and the highest number of days that we need to wait will be the maximum of this bloom days. Okay, so our binary search will operate from the minimum to the maximum of this array. Okay, and we need to check if at that particular day we are like able to make a bucket or not. So of size k, like k is the size. Okay, k is the size of the bucket that we need to make, and m is the number of buckets that we need to make. Okay, so we need to check that can we make m buckets of size k at that particular day. So let's take the second example where m is equals to 3. We need to make 3 buckets of size 2. So on the one day, we will be able to make no buckets. On 2 days, okay, one. Okay. Why is it getting disconnected and reconnected again and again? OBS Studio. Reconnection successful. Although it is working fine, it's annoying. Hmm. Where were we? We were trying to solve this test case. So we need to make buckets of 2 buckets बनाने हमें और each of size 3. So um, 2 buckets and the minimum number of days. Okay, this flower will bloom at day number 7. अच्छा ठीक है. Here we see this flower will bloom on day number 1. Let's get back to the first test case. यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फ्लावर है वो एक दिन में ब्लूम कर जाएगा, जो लास्ट वाला फ्लावर है वो 2 दिन में ब्लूम कर जाएगा, और ये जो मिडल वाला फ्लावर है वो 3 दिन में ब्लूम कर जाएगा. एंड साइज ऑफ द बुकेट इज 1. सो मतलब फर्स्ट डे में भी हमें एक बुकेट मिल जाएगा. सेकेंड डे हमें
एक बुकेट मिल जाएगा एंड थर्ड डे भी हमें एक बुकेट मिल जाएगा. ओके ओके ओके. सो on day 1 we will get the first bouquet. On the day 2 we can only make 2 bouquets. Okay, it will also be counted. On day 3 we can make 3 bouquets and the answer is 3. Okay, now it is a lot more clear. Okay, we need to find. Okay, 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 okay. So check function कैसा बनाएंगे हम कि like given m and k and we will check if possible to mm, which flowers will be bloomed by day number. अच्छा ठीक है, कोड करने का ट्राई करते हैं. So we will be making into low of minimum of. Okay, sorry, मिनिमम नाम का हमें सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा क्या? मैथ मैथ डॉट min of bloom day, right? And int I is equals to mm, Kumar Guru is saying use binary search bro. Yes, we are solving only binary search problems. All the problems that we are solving are from binary search only. We are, for your kind information, we are solving Striver SD sheet. Let me show you. This is the sheet that we are following and solving, and we are on the step number 4, lecture number 2, binary search on answers. And I was just trying to understand the problem's logic, how I can implement binary search in that problem. That is why I was thinking too long. And this is what I'm doing. I is equals to math dot maths bloom day. And let's say if we don't find any. Okay, thank you for your suggestions, Kumar Guru. Answer is equals to -1. If we don't find any day at which like we can make m flowers of size k, then we will return -1. And then let's try to implement binary search on the search space. That will be iterating from low to high. And the mid index or mid date will be equals to low plus high minus low divided by 2. Okay, until here things are clear. Mm, Now we need to check.
have to make, we will have to check कि the given number will be possible or not. So mm, the array is not sorted as well. Mm, okay, it is sorted, bro. We are searching for near to high. That is definitely sorted. Okay, so we can do it. If the mid is the possible number of ways, it could be our answer. We can store it in our answer. Let's say we will make a check function and we will check if it is possible or not. Let's say we will make is possible and we will give bloom day, comma mid, comma m, comma k. And if it is true, then we will store answer is equals to mid and and shrink the array to the left, right? I is equals to mid because we need to find the minimum number of. क्या मेरे टाइप करने की आवाज आ रही है क्या कुछ अनाउंस नो इज इक्वल्स टू mid plus 1 and then we will return answer. And for this, we will have to make this is possible method or function. So um, ये क्या किया है मैंने biggest mistake is here in यहाँ पे int low will be equals to integer dot max underscore value and int I will be equals to integer dot max underscore value. Okay, and then we will do for integrate in Bloomberg. Am I audible? Yes, I am. Hmm. What we were doing? Bloom day. Okay, we will check every day of bloom day. If it is the highest or the lowest, and then we will store it in our low or high pointer. Low pointer will store math dot minimum of low comma day. Okay, and the high pointer will be pointing math dot max of high comma day. Mm, then okay, now it is fine. Mm, okay, it is fine as of now. We need to make the only method for checking if it is possible or not. If that on that particular day, we can make required number of bouquets. So let's say
public, let's say boolean, boolean mm, is possible, and we will give argument as bloom day array int day, int m, and int k, and then we will check if the particular day we can make required number of bouquets or not. M is the number of bouquet, K is the number of the size of the bouquet. Let's say in how can we wait through the garden? Let's say we will iterate over each of the day in bloom day, and we will compare it with the particular day on which we are comparing. So let's say we are comparing for the mid will be like 5. So before 5 day, this flower would have bloomed. We will add it to our like bloom. mm, as size is equals to K. mm, Adjacent flower will increase. Okay, on this day, like it is less than 5, so it will not be bloom. So we will skip it. On the next flower, it is less than 5, so it will bloom, and we will move forward. It is less than 5, sorry, greater than 5, it will not bloom. And similarly, the last element would have bloomed. So this flower bloomed, this flower bloomed, this flower is also bloomed. So on day 1, this only will be bloomed. On day 2, this and this will be bloomed. That means total number is okay. Or we can take only one day, or like all the number of days. Return the minimum number of days we need to wait to be able to make M bouquets. Okay, we have to wait, and we have to make all the bouquets on the same day. So that will be like on day 3, we will be able to make 3 bouquets, and that is our goal. So how we can implement it? Let's say we will take a count of bouquets that are already made. Mm, So ठीक है. Adjacent flowers. So we will have to take 2 pointers. So for every particular name made, we will take BQT bucket made equals to 0, and then int ADJ adjacent flower. FLOWR flower, flowers is equals to 0 as well. And then we will equate to the garden to see what's bloomed by the given day. So at that particular day, how many number of flowers are blooming? We will check this using for loop. We will iterate bloom day
for every day in bloom day, and then we will compare if bloom day is less than the current day that we are checking for, then it is bloom and it can be used in adjacent flowers. So how do we know it is adjacent flower? If it is less than, okay, we will update the adjacent flowers if it is less than our current day. And ठीक है, if it is equals to k, then we can make a bouquet and reset the counter of bouquet, and bouquet will be made. But we will change the counter for every bouquet. We will be checking on this, and number of bouquet will be increasing. Hmm, ठीक है. युवल इज सेइंग ये लीड कोड 1482 वाला कौन से नंबर का है जी? मतलब स्ट्राइवल की शीट में कौन से नंबर पे है, या ये वाला है फोर्थ वाला प्रॉब्लम, स्ट्राइवल की शीट का फोर्थ प्रॉब्लम? You are given n and you are also given an array, yeah, where error I denotes the ith rows will be on the ith day. You can only pick already plain roses that are adjacent to make a bucket. You are also told that you require exactly two k adjacent plain roses to make a single bucket. Finally, of course, इसमें roses का example दिया है. So for example, this is the case. We need to make two buckets of size 3. So the minimum number of days will be required is 7. The next one is 13. The made of 7 and 13 will be 11 or 10. Then will be the made, and we will compare if after day 10 we can make two buckets of size 3. So if the size of the bucket is 3, that means we need to take 3 adjacent buckets. Mm, and we will be able to make only one bouquet. So we will iterate over the right half, that means 10 to 13. We will take 12, 12 as our mid. Darshan is saying, bro, I'm currently working. Where are you, bro? Where are you working, bro? Like on in which company you are working in? So we will check the other half, that is 10 to 13, and it will be like 30. So the mid will be um, is, like, mm, 11 will be the first. On day 11, we will have
Only one bucket made because adjacent element of it like this. In service based, bro. It is okay. You can improve as well. We are also gonna get a service based company in our initial days as freshers. Mm, so it is completely fine, I guess. Bro, how is your experience in that service based company? Can you share with us? Bro, I am a college student currently in fourth year of college and मेरे भी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं जिसके लिए मैं थोड़ा स्कैर्ड हूँ इसलिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे से once I get a job then we will look forward on preparing for a big tech company but right now we are only looking for a decent package that we can get from our college itself without going out. Darshan, if you don't mind, can you share us your experience in the service-based company? And are you also looking for like switching to a big tech company? And how was your experience? The experience is good, but there is no process. I I think you mean to say there is no progress. You can't progress much, right? Yuval is saying that you work in Lakshmi cheat fund. Right? I know, right? Okay, Darshan is saying I'm looking to switch for big tech company. Keep working hard, bro. We will definitely gonna do it. All the best for you. I hope you get the company you wish for. Mm. And how difficult it was for you to get in that service-based company? Like, are you getting a package around 5 LPA to 10 LPA or like it is decent and you want to switch to like something product-based company? I forgot the question. I put, you're saying there's no, it is not progress, there is no end-to-end process. Okay, service-based. Don't scare me, bro. It is fine. So you got this job recently or like you have been working since like years? How much experience do you have, bro? Like it's been just 1 year or like you joined it recently or you have been working on that company since few years? I'm really interested to know your journey. Yeah. So please do it done. What on 12 oh, 1 year of experience, bro? Then it is fine. You, as a man developer, it is okay. Like you have a job at least.
and you can definitely switch once you upskill yourself. And what do you think, bro? Like, what do you think? Man is not in demand. Like, you have been working since 1 year on man stack in a service-based company. So, what do you think? Like, what is better? You think Java is more in demand? I'm really curious to know. Like, I had also decided that I will learn Java for backend only. Mm, and I think it was the right decision. Merg is in good demand, bro. Yes, definitely. For the like startups and like small scale companies which are not scaling too large on an enterprise level, it is really the best. मन के अपने like फायदे हैं, but आई थिंक जो कि बहुत ही ज्यादा लार्ज लार्ज स्केल पे काम करती हैं एंटरप्राइजेज, उनमें जावा की डिमांड ज्यादा रहती है। एंड मोस्ट ऑफ द जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका डेटा बहुत पहले से बना हुआ है, वो शायद जावा पे ही बना हुआ है बैकएंड। युवल वार के फ्रेम झूठ बोले कौवा काटे। जावा इज मस्ट, राइट? हाँ, that is what I am saying. Like, I don't want to get stuck on startups and like small scale companies. I want to experience enterprise level work. That is why I am also like trying to learn Java for my full stack skill. I will also try to like live stream all my learnings for that as well. Thank you so much, Darshan, for sharing your insights. Mm, is there anything you are saying or you want to add? Then we will move to the like problem. Thank you so much for joining us. Okay, let's move to the next problem, right? Oh, not the next problem, but back to the same problem that we were solving. Yuval is saying my college blacklists me if I code in C++. What should I do? I can't do nothing, Yuval. We have been, Darshan is saying, bro, why you not get up skilling in AIML? Bro, इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक लाइक, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना कॉलेज में, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने लाइक रिसर्च किया थोड़ा कि लाइक क्या मुझे ए आई एम एल लेना चाहिए एज अ ब्रांच। तो मैंने एक वीडियो एक्सप्लोर किया जिसमें लाइक वो बंदा था, वो कहता है कि ए आई एम एल ना करेंटली ग्रो कर रहा है, और उसमें ना रिसर्च बेस्ड रोल्स ज्यादा होते हैं। लाइक जो कंपनीज होती हैं वो डिमांड करती हैं कि लाइक यू हैव डन मास्टर्स इन ए आई एम एल, then only you will get like opportunities working in AIML roles. But nowadays the case is different. So I did not like took interest in that initially. I thought that once I get into the like IT industry, then I will upskill myself in AIML, and then I will try to like upskill myself. Rahul Bist is there. Hello, bhai. Hello, welcome back, Rahul. How are you? How was your day? Darshan is saying, bro, try to communicate in English. Okay, I was speaking in Hindi. Yes, I'm trying my best to speak in English only, but some people come and some people, okay. Darshan is saying that is good choice. Like, I don't got it. Like, what do you mean?
AI/ML is good choice, or like should I first get into IT industry and then I will upskill myself in AI? Is it that that choice is good, or like what do you mean? Please clear. Yuval is saying no English, only Marathi. This is not Bangalore, Yuval. We are on the internet. Hey Darshan, are you there? Yes, you should get into it first. Okay, thank you so much, Darshan, for guiding me and letting me know that I am thinking on the right track. Thank you so much. So, should we move to the problem now, or do you guys have any other queries? Okay, this is what I thought earlier as well. Like, there is so many possibilities in the AI/ML itself, and the probability part, and the data analytics, and the mathematics. I had learned initially that we need to have like strong command in probability, data analytics, and mathematics as well. ये तीनों चीजों में you should have command on all these three things to have a career in AI, ML, and data science, something like that. So I was a little feared of these because I don't want to go that deep in mathematics anymore. I loved mathematics in my school time, but not anymore. I'm cooked already. Darshan is saying all the best for your career. Thank you so much, Darshan. Same to you. I hope you get your dream company in recent time. We will think, code, thrive together. And thank you so much for sharing your insights. Let's move back to the problem. कहाँ तक पहुंचा था मैं मेरे को चेक करना है कि on the given day if we can make the required number of bouquets or not. The size of the bouquet is A, number of bouquet is M, and we are making Rahul Bist is saying आज के टेस्ट में फुल चीटिंग की कोई ना ब्रो it works like it is fine initially, but you should learn as well. Rahul, don't cheat. I would not suggest you to cheat in test. Okay, let's get back to the problem. What I was doing, where is the code? Okay, we had implemented the binary search for both. Okay, the search space is from the lowest number of days to the maximum number of days that is in their Bloom day array. So we have a search space from the minimum to the maximum number of days that are provided in the Bloom day array. Then we need to mm, we need to compare that on that particular day. Like we will divide the search space into half, and on the middle of the search space we will compare on that particular day if we can make m number of bouquets of size k. If it is possible, then we will store it in our answer. And as if it is possible to like make m number of bouquets of size k on that particular day, that means k we might be able to make same size, same number of bouquets in lesser days also. So we will shrink the size of the array. If we are able to make the required number of bouquets on particular day, then we will shrink the size and try to check a smaller number of day at which we can
make the same number of bouquet of same size. So let's think of its logic. So we will keep a bouquet made index, like sorry, pointer, which will be storing the number of bouquets made and adjacent flowers. ठीक है. In bouquet day, bloom day. So for each day in bloom day, we will check if the bloom day is less than our required number of days, like today's particular day, like which day we are checking. So we are checking for mid and we have given mid as day. Okay. So we will check if the given if the particular day is less than given day. So we will compare if the day is less than equals to given day. राहुल बिस्ट इज सेइंग भाई आज आपका डे 17 हो गया क्या हाँ ब्रो इट्स 17th डे of a series and if it is less than the given day we will increase adjacent flowers and if it is not then we will put adjacent flower is as 0 ठीक है अगर मतलब adjacent flower का bloom day बहुत ज्यादा है तो we will reset adjacent flower okay count then ठीक है we have done this and what else we need to do we need to check if k is adjacent flowers is equals to k so अगर adjacent flowers का number required size के बराबर है adjacent sorry ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया we had created the variable as adj राहुल बिस्ट सिंह किस पॉइंट पे आ गए हो आज आप ब्रो वी आर ऑन स्टेप नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2 दिस इज इट बाइनरी सर्च का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और उसका फोर्थ प्रॉब्लम ओके सो लेट्स कंटिन्यू वेयर ठीक है वी नीड टू चेक इफ adj adjacent flowers is equals to the required number of flowers okay if it is equal then we will increase the count of bouquet made so bqt made plus plus so made plus plus mm, and adjacent flowers will also become 0 adj flower is equals to 0 we will reset the count of adjacent flowers once the adjacent flowers is equals to the required number and bucket is made bucket का count increase हो जाएगा ठीक है and then we will return okay return vqt made greater than equals to what variable we had given mm, vqt made is equals to or greater than equals to m ठीक है it should work and anything else we are missing on
Let's try to run. Guys, is there any error in my code? We can improve it if we can improve on it. Thank you so much, Mayank. Guys, check out this code if it is right or not. Should I run it? कोई mistake तो नहीं है ना? You guys can tell me if I'm making any mistake. Hmm, what chat? क्यों नहीं दिख रहा है? Live chat. Why the live chat is not visible, guys? Okay, it is back again. Hmm, let's run it. Compiled error. Bloom day he exists. Okay, cannot find the single bloom day. Okay, what is wrong? Blood day लिख दिया यार मैंने. I was giving argument as blood day. Blood day क्या होता है guys? Again an error. अब क्या मिस्टेक है? ब्लड डे 4 int ब्लड डे. कहाँ पे कर रखा है हमने ब्लड डे? ओके ब्लडी मंडे. भाई टाइम लिमिट एक्सीडेड. Why? What's wrong in this? टाइम लिमिट क्यों एक्सीड हो रही है गाइस? एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ क्या? अच्छा एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो गई. हमने कौन सा बेस केस चेक नहीं किया? हम्म, बेस केस मिड -1 लो मिड +1. क्या गड़बड़ कर दिया? ADJ flowers, ठीक है. ADJ flowers. अरे इसको तो अपडेट किया है, कर दिया. What is wrong in the code? Can you help me out? Let me think of it myself. What wrong am I doing? That quiz making. Okay, here we are putting it as max. It should be minimum.
Okay, now it is correct. Now it will be running quite well. Let's see. Finally working. Let's submit and check if it is working. Okay, it is working. Beats 40% of the solutions. I don't know how people are able to solve it in 0 milliseconds. Should I check how people are solving it so quickly? What logic they are implementing? They create a Java page folder. They created main div. Check it. Here we can check. Okay, what he's checking? He's checking if it is greater than the length and returning -1. I j is equals to 0. Bloom is greater than j equals to p. Okay, when j is greater than I, made is ठीक है. Okay, fine. He has created variables as I and j. Mm, I, Parth Agrawal is saying from which batch are you? Like 2026 batch, final year, right? I'm in final year, if that is what you mean. How is this? Okay, one thing we don't have in our code is this statement, and everything everything else is like same, quite the same. Bouquet, flowers, I, J, bouquet, and okay. So this is okay. We ये I लेस देन 500 तक क्यों इक्वेट कर रहा है ब्रो? राहुल बूस्ट सिंह भाई इसमें क्या करना है? I will explain Rahul. Hmm, let's let's check if it exceeds the possible number of days. Where we can put it. Let's say you can put it here. Hmm, let's say int n is equals to bloom a dot length, and we will check. Okay, Rahul, I will explain. Just wait a minute. We will check k is greater. M into k is greater than n. That is, m is the number of bouquets, k is the size of the bouquet. Mm, If n star, where is star n star k is greater than n, we will return -1. And that too is wow. And that's one. Once again, it's a it is still the same. Okay, I don't know how we can improve it. Let me explain the problem. Can you draw? बहुत सारा मैं estimate कर लिया हूँ. कहाँ करें इसके नीचे करते हैं. So the problem क्या state करता है, ये lead code वाला problem देखते हैं. We needed to find the minimum number of days to make a bouquet. ठीक है, bouquet क्या है? Like
जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का बुके होता है, बुके। यस, बुकेट नहीं, बुके। तो वी हैव गिवन एन एरे, लाइक हमें एक एरे गिवन है ब्लूम डे नाम से, जिसके अंदर मतलब ठीक है, पहले तो एक ब्लूम डे नाम का एरे गिवन है, एक इंटीजर गिवन है एम, और एक इंटीजर गिवन है के। राहुल बिस्ट इज सेइंग, भाई आज हमने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया लेकिन उसमें जावा लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ब्रो, जावा इज क्वाइट सिमिलर एंड एग्जैक्टली सेम एज कॉटलिन, शायद जावा को ही स्विच करके कॉटलिन कर दिया हमने, कुछ तो ऐसा ही है। मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो पे ज्यादा काम नहीं किया, तो आई हैव नो आइडिया। पार्थ अग्रवाल, आर यू स्टिल वॉचिंग? वेयर आर यू? सो राहुल, आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है, एक इंटीजर एम गिवन है, इंटीजर के गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें पहले तो एरे के अंदर हमें ना, लाइक नंबर ऑफ डेज गिवन है कि गार्डन है, गार्डन में एन फ्लावर्स हैं, और जो आइथ फ्लावर है ना, वो ब्लूम ऑफ आइज को ब्लूम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गार्डन के फ्लावर्स हैं। ये पहला वाला जो फ्लावर है ना, ये एक ही दिन के अंदर ब्लूम कर जाएगा, रेडी टू बी यूज। ठीक है। लेकिन ये वाला जो फ्लावर है, ये ना 10वें दिन पे रेडी होगा यूज करने के लिए, और ये वाला फ्लावर तीसरे दिन पे होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एडजेसेंट फ्लावर्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि पर्टिकुलर डे पे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि इतने दिन के अंदर ना हमारे के नंबर ऑफ एडजेसेंट फ्लावर्स कैन बी यूज टू मेक अ बुकेट, एंड वी हैव टू मेक एम नंबर ऑफ बुकेट्स। थोड़ा ट्रिकी है ये। लेट्स से, okay, so let's say we have given what is given to us. So it is given bloom array, like bloom day. Instead, let's type it. क्या गिवन है? ब्लूम डे नाम का एरे गिवन है, ठीक है, which consists of flowers. Let's copy it from here and let's copy, paste it here. और उस एरे के अंदर ना हमें ये डेज गिवन है कि it is array of flowers in which this particular flower will be bloomed in 1 day. This particular flower will bloom in 10 days. This particular flower will bloom in 3 days. This particular flower will bloom in 10 days. And this particular flower will bloom in 2 days. मतलब इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ फ्लावर का सेट है एक हमारे पास, लेकिन जो सारे फ्लावर्स है ना, वो अलग अलग टाइम पे रेडी होंगे यूज होने के लिए। तो जो पहला फ्लावर है वो पहले ही दिन रेडी हो जाएगा यूज होने के लिए, जो दूसरा फ्लावर है उसे 10 दिन लगेंगे रेडी टू बी यूज। और हमें दो इंटीजर और गिवन है। दो इंटीजर क्या गिवन है? एक इंटीजर गिवन है m, in this case m is given equals to 3, and of k is equals to 1। ठीक है। तो m का मतलब क्या है? m is the number of bouquet that we need to make। ठीक है। तो let's say m1 is a bouquet, मतलब ये m1 एक बुके है जिसमें लाइक k 0 0
नाम का एक फ्लावर होगा। उसके बाद में इसमें K01 वाला एक फ्लावर होगा। उसके बाद में एक K02 नाम का फ्लावर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि मतलब, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, के इज द साइज ना। देखो एक, मतलब ये नंबर ऑफ बुके कितना गिवन है, 3। और जो सारे बुके है ना उसका साइज गिवन है के इज द साइज ऑफ द बुके दैट वी नीड टू मेक, एंड एम इज द नंबर ऑफ बुके दैट वी नीड टू मेक। हमें 3 बुके बनाने हैं और हर बुके का साइज है 1। तो पहला बुके होगा K1, दूसरा बुके होगा K2, और तीसरा बुके होगा K3, जिसका साइज होगा के। तो गिवन केस में साइज क्या है, मतलब 1 1। तो हमें बस एक फ्लावर फाइंड आउट करना है जो पर्टिकुलर मिनिमम डे पे ब्लूम हो जाए। और हमें रिटर्न क्या करना है एक्चुअली, हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू मेक एम नंबर ऑफ बुके ऑफ साइज के। ठीक है, तो मतलब हमें के साइज के एम बुके बनाने हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने, मतलब मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड हैं टू मेक सच बुके। तो हमारा मतलब पॉसिबल आंसर स्पेस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर स्पेस क्या होगा कि गिवन गार्डन में ना, जो सबसे कम दिन में कोई भी फ्लावर ब्लूम कर रहा है वो क्या है, 1। तो इट इज, मतलब जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे। ठीक है, तो हम लो को कहाँ पे पॉइंट करेंगे, मिनिमम ऑफ द ब्लूम डे, दैट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ब्लूम डे। अभी तक सुन रहे हो ना राहुल, या हो गया? ठीक है, जो लो पॉइंटर है बाइनरी सर्च के लिए, जो हमें 2 पॉइंटर लगते हैं, उसमें लो पॉइंटर को हम कहाँ पॉइंट करेंगे, मिनिमम ऑफ द एरे। और जो हाई पॉइंटर है उसको मैक्सिमम ऑफ द एरे पे पॉइंट करेंगे। मैक्सिमम ऑफ द एरे क्या होगा, हाई, हाई विल बी द मैक्सिमम ऑफ द एरे। मैक्सिमम ऑफ विंडो। और इसमें हमारा गिवन एरे में क्या होगा, हमारा मिनिमम ये 1 होगा, और इस केस में हमारा मैक्सिमम क्या होगा, 10। ठीक है, तो जो एक्चुअल में हमारा, ठीक है भाई मैं, चल ठीक है, फिर क्यों लिए तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो एक्चुअल में हमारा जो सर्च स्पेस होगा ना, आंसर स्पेस, आंसर स्पेस
जो हमारा आंसर स्पेस होगा, जो हमारा आंसर स्पेस होगा, हमारा आंसर स्पेस होगा कहाँ से, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो या तो सिंगल डे में हमारा काम हो सकता है या फिर हमें 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है, 3 बुके बनाने के लिए। तो अब लेट्स से ऑन डे 1, वी सपोज ये जो एरे गिवन है ना, ये गार्डन है, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और फ्लावर है वो ब्लूम कर जाएगा, तो लेट्स से इट विल बी ब्लूम, तो इसको एक्स मान लेंगे। और जो डे 1 पे, ठीक है, और जो बाकी के रिमेनिंग वाले जो रहेंगे on day 1, the first element will be bloomed and other will not. So other will be like dash, 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 and dash. Okay, and then we will check on day 2. On day 2, we will have this. Okay, sorry, this one also bloomed. That will be like this. And on day 3, we will have mm, 3 flowers that will be bloomed. So it will be like this. सो हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डे रिटर्न करना है जिसमें कि हम गिवन नंबर ऑफ बुकेस बना सकें। सो देखो, फर्स्ट टेस्ट केस में जो बुके का साइज क्या गिवन था, 1। क्या गिवन है, 1। ये जो k इज इक्वल्स टू 1 गिवन है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सिंगल फ्लावर होगा ना वो खुद एक बुके हो जाएगा। तो हमें बस ये चेक करना है, अगर इसी की जगह k का साइज 2 होता तो लाइक वी वुड हैव चेक द एडजेसेंट एलिमेंट्स एज वेल। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट केस, जहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 3 है। ये वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको लेते हैं। m इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 3। लेट्स से yeah, क्या था, bloom day is equals to this array, ठीक है। अब लेट्स से ये ब्लूम एरे गिवन है, और इसके अलावा ये आर गिवन, we are given m is equals to राहुल बेस्ट इज सेइंग, भाई मेरे कारण आपके व्यू तो कम नहीं हो गए क्या? इट्स completely fine bro, that doesn't matter, but you need to stay on the live stream yourself.
what was that? एम इज इक्वल्स टू, मतलब हमें दो बुके बनाने हैं और ईच ऑफ साइज के इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं? हमारे पास लाइक 4 एंड 3 7 फ्लावर्स हैं। और जो, अच्छा इसका साइज 7 7 है क्या? अच्छा ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें दो बुके बनाने हैं और साइज उनका होना चाहिए के। सो लेट्स से इफ वी हैव दिस, एक बुके तो क्या हो सकता है, ऑन द 7th डे वी विल हैव दीज 3 flowers रेडी टू बी यूज्ड। तो एक हमारा जो M1 बनेगा या B1 बनेगा बुके, वो 7th डे पे रेडी हो जाएगा। लेकिन बाकी और कोई एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है जो, मतलब एडजेसेंट फ्लावर्स नहीं है जिसको हम बुके बना सकें, है ना? तो हमें क्या, डेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब 7 डे के अंदर हम सिर्फ एक ही बुके बना पा रहे हैं, हमें और वो फ्लावर्स यूज करने हैं जो एडजेसेंट हो एक दूसरे के, राइट? वी नीड टू यूज एडजेसेंट फ्लावर्स। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करेंगे एंड वी विल चेक ऑन 12th डे, क्योंकि 12th डे हमारा ये वाला भी रेडी हो जाएगा ब्लूम, मतलब यूज होने के लिए। तो फिर क्या होगा, हमारा ये वाला एक बुके बन जाएगा और उसके बाद के एलिमेंट्स के साथ में ये वाला एक बुके बन जाएगा। सो ये 6 फ्लावर्स जो है ना वो रेडी टू बी ब्लूम होंगे, तो हमारे दो क्या बन जाएंगे, हमारे दो बुके बन जाएंगे। ठीक है, सो वी विल रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करेंगे, हम 12 रिटर्न करेंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, वो लॉजिक कैसा है? Hardik is saying, bro, merge short bata do using recursion in Java. Bro, we have done that on a particular video already. मर्ज शॉट वाले, शॉर्टिंग एल्गोरिदम वाले वीडियो में हमने कर रखा है, लर्न इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड मर्ज शॉट, like we have done it on this learn important sorting techniques lecture number 2, the merge shot. You can watch this video on my channel, on which day we have done merge shot. We have done it on, I guess, day number 6. नोशन में आज डे 6 में हमने क्विक शॉट को कवर कर लिया है 8 घंटे में। नाइस, क्या प्रोडक्टिविटी है। लेट्स सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स नाउ। इजी प्रॉब्लम्स में क्या है, left rotate by d places, move zeros to array problems are afterwards. Linear search, find the union, find missing number. Okay. Mm. So it might be on the day 5. You can watch the video of day 5. It is day number 5. It is day number 4 or 5. Okay. Yes.
So it is day number 4. It is the most viewed video of my channel as of now. Personal selection shot, shot, double shot, insertion, then a break, and then merge shot. यहाँ इस part पे मैंने बताया. Okay. Thank you. You're most welcome, bro. You can watch from 2 or 30 seconds or day number 4. Okay. Day number 4 from 2 or 30 minutes. Okay, let's continue. What we were doing. So we will check on 2 days. Let's say day number 7. Day number 7. On day 7, we will have only one bouquet. BQP will be 1. Hardik Kanwal is saying, okay, boss. BQT will be equals to 1. That is this one. But after that, there are no adjacent flowers which are equals of size k, right? So we can't select this as our answer. Then we will move to the next possible day. That will be day 12. That will be day 12. On day 12, B2 will be equals to 2. That is the required answer. And let's try run. So let's say we have to try run for logic. Mm, let's say we are doing the dry run of our solution. What we will do, mm, we will set the search space as low and low equals to the minimum. So low pointer will be pointing at the minimum value of the array, that is 7, like minimum, is it understandable? Minimum of the given array bloom day, मतलब जो भी minimum number of days है. So Vishal Maurya is back once again meeting. Welcome back, Maurya ji. So what still solving the same problem. Like I've solved the problem, but trying to explain the solution. Okay. So minimum of the bloom day. That will be equals to 7. Right? And the high will be maximum of bloom day.
max of blue. ठीक है तो ब्लूम डे में ओके हाँ मुझे ये अपडेट करनी थी लेट्स अपडेट इट राइट नाउ dashboard edit web tracking customers people customers showing now here are the links and we'll calculate the Discord invite link. Mm, Discord server invite link. How can I get the invite? Mm, add members. अच्छा इसलिए वो एक्सपायर हो गया invite people set this to never expire and copy and then I will post it here publish okay and also on a live stream let's update it. Where is the link? Share this to community. Paste it. So, okay, Maurya ji, I have updated the link and here it is for Discord invite link. Okay, I've also updated in the chat as well. Now you can join our Discord server. Okay, Vishal Maurya have joined. Okay, it is fine now. Let's get back to the problem. हमने लो पॉइंटर को सेट किया मिनिमम ऑफ विंग पे हाई पॉइंटर को मैक्सिमम ऑफ विंग पे so our search space is from the minimum to the maximum okay I have access
approved your request to access the Notion. Okay, so ठीक है कंटिन्यू करते हैं. हाई पॉइंटर सेट किया, लो पॉइंटर सेट किया. हाई पॉइंटर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? मैक्सिमम होगा क्या? 12. So maximum possible is 12. So first we will iterate over the array and select the highest possible and lowest possible number of days. And then our answer space will be answer space space will be equals to from 7 to 12. So we will apply binary search from 7 to 12 and we will check while low is less than equals to मेरी हैंडराइटिंग कैसी है गाइस? वो ड्रॉ करने में तो बहुत बेकार आ रही है. Is that what that is? So we will do we will create a mid pointer for this. That will be now एक mid pointer create करेंगे. Assume कि हमने कर दिया, बस मैंने नाम दे दिया mid of low and high. हाई के बीच का node बना देंगे हम. You have to write the right syntax. I'm not writing because I have to draw it. I have accepted. Vishal, I have accepted the request on Notion. I have already done that before you saying. Okay. So we have created the net pointer as well. And then what we need to do, we need to check if what solution that we have written. Bloom day के अंदर ये वाला स्टेटमेंट तो अभी भूल जाओ. We have created low pointer, high pointer और low और high को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे और एक आंसर वेरिएबल में नेगेटिव. Lali Pathak is saying you can type bro, it will be faster. By the way, your handwriting is super. Thank you so much. Yes, I should type it out. Sorry for wasting so much of your time. Let's skip it. Let's write the code here. अब पूरा ही कोड ही लिख देते हैं लोग. इसको क्या लेंगे हम सबसे पहले? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू. Okay. Why? Why? Because we will be comparing it with the lowest value in our array and int int
I is equals to integer dot min value value. How are you writing on this calligraph? With my touchpad of my laptop, only with my finger. So let me quickly continue this. Okay, and then we will iterate over the array for int day in bloom day. Bloom day we will do we will compare and put low is equals to math dot min of low comma day, and high will be updated with the maximum value, that is math dot max comma high, sorry, bracket high comma. Okay, this is what will update the low and high pointer, and after that we will uh, create a variable answer is equals to -1. If we are unable to find the accurate answer, it will return -1, and then we will apply the binary search, that is while low is less than equals to high. यहाँ तक तो समझ आ गया था ना कि लाइक जो हमारा आंसर स्पेस है वो है from the minimum of the bloom day to the maximum of the bloom day, that is 7, from 7 to from day 12. This is our answer space. Okay, so when we are putting low is equals to minimum of the bloom day, it will be putting it as 7, and the high pointer will be put as 12. So while applying binary search from 7 to 12, let's say number of possible days will be 7, 8, 9, 10, sorry, 10, 11, 12. So this is our search space, मतलब जो हमारा आंसर स्पेस है वो ये है एक्चुअल। जो गिवन एरे है उसमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है, बट हमारा आंसर है इस वाले आंसर स्पेस से। ठीक है, तो अब इसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। सो यहाँ पे हमारा लो पॉइंटर तो आ ही गया। हमारा लो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा? अरे यार, हमारा लो पॉइंटर पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस आंसर स्पेस, एंड द हाई पॉइंटर विल पॉइंट एट हाई पॉइंट लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस आंसर स्पेस। एंड मिड पॉइंटर जो हम क्रिएट करेंगे अभी, तो मिड पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा? यहाँ पे। ठीक है, मिड पॉइंटर इज नथिंग बट लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। हाई माइनस लो इज 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 2 plus 1 is 3. Okay, so it will be 10, and we will check if the mid pointer is the correct, can be the correct answer. Like in this code, we will create int mid is equals to low plus high minus low by 2. Okay, इतना समझ में आया? Then we will check if एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे इफ पॉसिबल या फिर पॉसिबल के नाम से। पॉसिबल, और उसके अंदर हम क्या इनपुट देंगे? हमारा ब्लूम डे का एरे, ब्लूम डे एरे इंट के एंड इंट, सॉरी, इंट एम, that is the number of bouquet that we need to make, and int k, that is the size of the bouquet, size of each of the bouquet. ठीक है, एंड अगर ये सही होता है, मतलब देखो ब्लूम डे का मतलब क्या है, पॉसिबल वाले फंक्शन मेथड का काम क्या है कि हमारा जो मिड पॉइंटर है उसको कंपेयर करना कि लाइक गिवन, मतलब इतने पर्टिकुलर डेज के अंदर हमारे दो बुके बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो हमारा गिवन प्रॉब्लम जो है, हमारे गिवन मतलब गार्डन में, गार्डन बोले तो ब्लड डे,
सॉरी, ब्लड डे क्यों लिख रखा है यार मैंने? ये ब्लड डे नहीं है, ब्लूम डे है। सॉरी, ये ब्लूम डे, ठीक है। तो ब्लूम डे में हमें क्या, एरे में क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि जो फर्स्ट वाला जो फ्लावर है वो सेवन्थ डे पे ब्लूम करेगा, सेकंड वाला भी सेवन्थ पे करेगा, थर्ड वाला भी सेवन्थ पे करेगा, फोर्थ वाला भी सेवन्थ पे करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें साइज ऑफ थ्री के दो बुके बनाने हैं। तो एक बुके बनाने के लिए हमें कितना, थ्री फ्लावर्स लगेंगे। तो इनिशियल जो थ्री फ्लावर्स हैं वो तो एक बुके के लिए यूज हो जाएंगे, लेकिन दूसरे बुके के लिए एडजेसेंट वो फ्लावर्स चाहिए जो रेडी टू बी ब्लूम हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो ये फोर्थ फिफ्थ वाला जो फ्लावर है वो ट्वेल्थ डे पे ब्लूम होगा। तो सेवेंथ डे पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, और एडजेसेंट फ्लावर्स फिर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर मिड, मिड इज टेंथ डे पे हमारा लाइक ये दो बुके बन के तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सो लेट्स से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यार ये इतना सारा क्यों कॉपी हो गया? मैंने तो बस थोड़ा सा किया था। ये इतना सारा क्यों? तो यहाँ से कॉपी करते हैं एंड लेट्स से ऑन डे 10, मतलब हमारा जो पहला मिड है फर्स्ट आइट्रेशन में, जो हमारा मिड है वो होगा 10 आंसर स्पेस में। तो टेंथ डे पे क्या होगा, ऑन डे 10 जो हमारे फ्लावर्स रेडी टू बी ब्लूम होंगे वो अभी भी सेम ही होंगे। डे 10 पे क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग के तीन फ्लावर्स हैं बस यही रेडी होंगे, बाकी फिर हमारे पास पॉसिबल स्पेस नहीं है कि हम इन तीनों को यूज कर सके, क्योंकि हमें एडजेसेंट वाले ही चाहिए। तो हम इसको स्किप कर देंगे, लेकिन हम अगर हम इसको स्किप करेंगे तो अगर ये सही होता तो हम क्या करते, इसको रिटर्न कर देते आंसर में। सो वी विल राइट द दैट लॉजिक फर्स्ट। यहाँ पे अगर ये सही होता, मतलब जो हमारा डे है उस डे पे अगर बुकेस बन जाते, तो वी वुड हैव देन व्हाट, आंसर इज इक्वल्स टू मिड एंड हाई इज इक्वल्स टू, और उसकी लेफ्ट साइड को स्विंग कर देते क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। तो हाई विल वुड हैव बिकम मिड माइनस वन। ओके। अगर लेकिन ये फर्स्ट वाले आइटरेशन में ऐसा केस नहीं है, उसका अपोजिट केस है। अपोजिट केस क्या है? अपोजिट केस ये है कि जो मिड वाला डे है ना, उस डे पे हम लाइक जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुके हैं वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो ब्लूम ही नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, तो उसका मतलब है कि उससे छोटे नंबर ऑफ डेज पे तो वो ब्लूम कर ही नहीं सकते। तो मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें राइट साइड वाला एरे को इटरेट करना पड़ेगा। कहाँ पे? इस वाले आंसर स्पेस में। अगर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आगे वाले एरे पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स पे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे इस वाले केस में, हमारा ये स्टेटमेंट चेंज होके क्या हो जाए, मतलब जो हमारा लो पॉइंटर है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन। ठीक है। तो मिड प्लस वन हो जाएगा तो क्या हमारा मतलब रिमेनिंग स्पेस क्या बचेगा जिसपे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, 11 एंड 12। एंड इसका जो लो पॉइंट मतलब मिड पॉइंटर होगा, मिड पॉइंटर क्या होगा, सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट। मिड पॉइंटर विल बी लो प्लस हाई माइनस लो, दैट इज 11 प्लस 12 माइनस 11 इज 1 बाई 2। तो दैट विल बी 11। मतलब 11 भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो अगले इटरेशन में क्या बचेगा, मतलब इस वाले इटरेशन में तो ये होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो एक फ्लावर है रिक्वायर्ड जिसको ब्लूम होना पड़ेगा तभी हम लाइक बुके बना पाएंगे, वो है 12। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज विल बी 12। तो इसके बाद वाले आइटरेशन में मतलब ये लूप कंटिन्यू चलेगा और फिर
12 वाले डे पे ना ये स्टोर कर देगा आंसर को, मिड को 12 में, व्हेन मिड विल बी इक्वल्स टू 12। इतना तो पार्ट समझ में आया, एल्स मिड लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। एंड ये वाला मेथड हमको बनाना पड़ेगा जिसमें हम चेक करेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर डे पॉसिबल है या नहीं। तो ये तो मेन वाला मेथड हो गया। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या, ये वाइल लूप का, ओके, वाइल लूप एंड्स हियर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल रिटर्न व्हाट, रिटर्न आंसर, वी विल रिटर्न आंसर। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? हम्म, ठीक है। ये वाइल लूप यहाँ एंड होगा, एल्स स्टेटमेंट यहाँ रन होगा, ये एल्स स्टेटमेंट ये वाइल लूप के लिए है, ये आंसर है। सो दिस विल रिटर्न द आंसर। और हमें यहाँ पे क्या पॉसिबल जो ये वाला मेथड है ना, इसको इसके लिए भी लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए लॉजिक हम अलग से लिखेंगे। हम्म, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि जो दैट पर्टिकुलर इटरेशन में जो मिड पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर डे पे लाइक नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुके हैं वो बन भी सकते हैं या नहीं। तो लेट्स से अब उस पर्टिकुलर मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे। एक तो बुकेट मेड BQT इक्वल्स टू BQT मेड, और BQT कर दो BQT इक्वल्स टू 0, मतलब पर आइटरेशन कितने बुकेट्स बन गए हैं। और एडजेसेंट फ्लावर्स ADJ फ्लावर्स। दूसरा पॉइंटर क्या होगा, मतलब एडजेसेंट फ्लावर, ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा कि मतलब एडजेसेंट फ्लावर्स कितने लाइक यूज हो चुके हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो दो दो वेरिएबल्स को हम लेके चलेंगे, BQT made इक्वल्स टू 0 एंड एडजेसेंट फ्लावर। एंड देन वी विल कंपेयर लाइक हम इस वाले, अच्छा उसका सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। इसका सिंटेक्स हमारा जो मेथड हम लिख रहे हैं, तो इसी के ऊपर लिख देते हैं। तो ये जो मेथड हम बना रहे हैं उसको लेट्स से पब्लिक मेथड बनाते हैं हम, पब्लिक, और बुलियन इट विल गिव ट्रू और फॉल्स। बुलियन इज पॉसिबल या फिर पॉसिबल के नाम से बनाएंगे हम। उसके अंदर हम क्या एरे इनपुट देंगे, क्या ब्लूम डे एंड इंट डे, और डे एंड इंट एम, that is the given number of bouquet that we need to make in minimum days, and then int k, that is the size of the bouquet that should be made.
Okay, so this is it. And inside this method, we will create two variables, bqt made. It is bqt मतलब bouquet. Bouquet made equals to 0 and adjacent flowers equals to 0. Then what we will do, we will iterate over the bloom array. मतलब हमने आर्गुमेंट में जो इनपुट दिया है bloom array, उसमें हम सारे बी डे को ना मतलब इटरेट करेंगे उसके सारे एलिमेंट्स में bloom डे, एंड देन वी विल कंपेयर के जो मतलब जो गिवन डे है, मतलब यहाँ पे जो हम डे इनपुट दे रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्या इनपुट दे रहे हैं ब्लूम डे में, यहाँ पे मिड एलिमेंट देना था इनपुट, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। मिड एलिमेंट मतलब यहाँ पे जो भी मिड आएगा ना, जो हम कंपेयर करेंगे आंसर स्पेस का मिड वाला डे, उसको हम इनपुट देंगे यहाँ पे। और हम कंपेयर करेंगे कि वो वाला दिन पे मतलब उस पर्टिकुलर डे पे हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ बुक पे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम सारे डेज के लिए इटरेट करेंगे, और उस फॉर लूप के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि लाइक फॉर every day in bloom day we will compare b day is less than equals to given day। मतलब जिस दिन के लिए हम चेक कर रहे हैं, अगर उस दिन से छोटा है तो मतलब देखो, ये वाला जो ब्लूम डे गिवन है ना, और सपोज कि हमारा पॉइंटर अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, डे 10 पे। तो अगर हमारा गिवन फ्लावर का जो ब्लूम डे है ना, वो हमारे करंट पॉइंटर से छोटा है, तो वो क्या होगा, वो हमारे एडजेसेंट फ्लावर में इंक्लूड हो जाएगा। और जब हमारा एडजेसेंट फ्लावर का काउंटर इक्वल्स टू के हो जाएगा, मतलब जो कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लावर्स है, अगर उसके बराबर हो जाएगा एडजेसेंट फ्लावर का काउंट, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुके इंक्रीज कर देंगे। काउंट ऑफ बुके विल इंक्रीज व्हेन के दिस विल बिकम व्हेन दिस विल बिकम के। यहाँ पे लिखते हैं, टाइप भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं when this becomes equals to k, we will increment bqt mid, right। मतलब जब जब ये k के बराबर हो जाएगा एडजेसेंट फ्लावर्स, तो हम क्या bqt का काउंट बढ़ा देंगे। और अब ये वाले जो जब हम चेक कर रहे हैं फॉर ईच फ्लावर, इफ बी डे मतलब उस पर्टिकुलर फ्लावर का ब्लूम डे, जब वो ब्लूम करेगा, वो अगर करंट डे से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम एडीजे को इंक्रीज कर देंगे। एडीजे ऑफ फ्लावर विल बी प्लस प्लस। ओके, एडीजे ऑफ फ्लावर विल बी प्लस प्लस, एंड देन वी विल मतलब अगर ये उससे छोटा हुआ तब तो ऐसा करेंगे हम। लेकिन अगर इन केस के जो करंट डे है, जैसे कि व्हेन वी रीच टू नंबर 12, जब हम 12 पे पहुंच जाएंगे, और हमारा करंट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, डे 10 पे, लेकिन जो हमारा फ्लावर है उस वो ब्लूम होगा 12th डे पे, मतलब उस पर्टिकुलर डे पे ये ब्लूम नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, एल्स वी विल डू मतलब अगर जो गिवन फ्लावर है उसका ब्लूम डे गिवन डे से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। पहले तो हाँ, रीसेट करेंगे एडीजे को, एडजेसेंट फ्लावर्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि देखो, फर्स्ट आइटरेशन के हिसाब से हम ये इस वाले पॉइंट तक पहुंचेंगे, जब तक तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वाले पॉइंट तक हम जब पहुंचेंगे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एडजेसेंट एलिमेंट है, वो कितना बन जाएगा, के बराबर हो जाएगा। के हमारा गिवन क्या है, के इज गिवन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो अब लेट्स से कि जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट वाले पॉइंटर के लिए, सॉरी फर्स्ट वाले फ्लावर के लिए, ये फर्स्ट वाले फ्लावर के लिए जो भी हमारा ये लूप चलेगा, तो इस वाले फर्स्ट वाले डे के लिए यहाँ पे क्या होगा, 7 7 को किससे कंपेयर करेंगे,
हमारा पहला मिड पॉइंटर क्या है, 10। मिड पॉइंटर कहाँ पे हमारा, इस वाले कोड में हमने मिड पॉइंटर यहाँ पे असाइन कर दिया, मतलब हमारे आंसर स्पेस का मिड एलिमेंट। तो हम इस पर्टिकुलर फ्लावर के ब्लूम डे को कंपेयर करेंगे इस मिड से, कि अगर हमारा ये जो फ्लावर है वो ब्लूम हो चुका होगा उस पर्टिकुलर डे तक, तो हम क्या एडजेसेंट फ्लावर को इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा एडजेसेंट फ्लावर का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा एडजेसेंट काउंटर, मतलब एडजेसेंट फ्लावर्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ भी हमारा एडजेसेंट फ्लावर का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा एडजेसेंट फ्लावर का काउंट कितना बचेगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। और मतलब इसके बाद में हम कहीं पे चेक करेंगे कि जब हमारा जो एडजेसेंट फ्लावर का काउंट है बिकम्स के इक्वल्स टू के, देन वी विल इंक्रीमेंट बी की ultimate, राइट। बट आफ्टर दिस इट विल इटरेट फ्रॉम जीरो, मतलब जो बीक्यूटी का काउंट है वो फिर से जीरो हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो ये नेक्स्ट वाला फ्लावर है ना, ये ब्लूम ही नहीं किया होगा, क्योंकि हम अभी डे 10 पे हैं। और ये वाला फ्लावर जो है वो ब्लूम करेगा 12th डे पे। तो ये वाला फ्लावर ब्लूम नहीं किया तो हम इस वाले लूप के एल्स स्टेटमेंट में चले जाएंगे, और एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे तो हम क्या, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो बिकम जीरो। ठीक है, इतना आई होप यू अंडरस्टूड। ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी थी पहले, आई थिंक। कौन सी स्टेटमेंट लिख देनी थी, इसके बाद वाली। हम्म, देखो, इसके बाद वाली स्टेटमेंट थी, if the ADJ flower is equals to K, then we will increase the count of BQT made। BQT बोले तो बुके। BQT made plus plus, okay, and we will reset adjacent element to zero, मतलब adjacent flowers to zero। okay, so this way, मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद में जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो फिर से जीरो हो जाएगा। ओके, विजन, जहाँ पे इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के बाद में जो हमारा एडजेसेंट एलिमेंट का काउंट है वो फिर से जीरो हो जाएगा। येट नॉट एक्सेप्टेड द नोशन रिक्वेस्ट। आई हैड एक्सेप्टेड ब्रो। इज द नोशन विजिबल। देखो मैंने एक्सेप्ट कर दिया वैसे। लेट मी फिनिश। यहाँ पे अगर एडजेसेंट फ्लावर का काउंट इक्वल्स टू के है तो हम बीक्यूटी मेट को इंक्रीज कर देंगे, एडजेसेंट फ्लावर को जीरो कर देंगे, and then we will return from this method true or false depending upon। यहाँ पे ये फोर लूप भी क्लोज हो जाएगा। फोर लूप क्लोज होने के बाद में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न बी क्यू टी मेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अगर गिवन एम से ज्यादा है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, मतलब जितने भी बुकेट्स बन गए हैं वो अगर रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। दिस इज ट्रू। यहाँ आ जाए। So this is the whole code for the problem, that is this is the required solution।
complete. हम्म, अच्छा यहाँ पे मेथड का नाम नहीं था। इसको भी कंप्लीट ही कर देता हूँ। इसके पहले I should write public int minimum number of days integer array bloom day comma int comma int m comma int k and curly. So this is how the whole code of this problem will be completed. Okay, and at the end, just closing curly brackets. So this is how it will be done. Mm, Let me check how is the stream going. People are watching. People are there. Let's continue. देखो ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. I've explained the whole dry run as well. मतलब पूरा ड्राई रन करके तो नहीं दिखाया मैंने अभी, बट दिस इज द बेस्ट आई कैन डू ऑन Scalera. I have I don't have better tools to explain. Let's update it. This is smart parking. So here it is. Minimum number of days to make a on buckets. Bouquet. Now let's solve the aggressive cow book allocation. Split array largest sum. ये वाला करते हैं पहले क्योंकि लीड कोड पे अवेलेबल है. और लीड कोड पे let's check if we are on the street. Hmm, okay, we have solved this within hard questions. And we are regular since day 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and today is 18. So we are consistent on lead code. I hope we carry this consistency forever. Let's move to the next problem, guys. This is the hard one. It was also hard. Minimum number of days to make advocates that we have done finally. And let's say we will solve this problem. Split array largest sum. Stop. Lead code problem number कितना है? 410. Split array largest sum. Given an array nums and an integer k, split nums into k non-empty subarrays such that the largest sum of any subarray is minimized. इसका क्या मतलब हुआ? Largest sum of any subarray is minimized. Hmm. Subarray is a contiguous part of an array. I know it. How to minimize the largest sum of the split? मतलब जितने भी splitted subarrays हैं, let's take this test case. यहाँ पे given है 5 elements given है. K is equals to 2. K is the number of subarrays that we need to divide it into such that the largest sum of any subarray is minimized. मतलब output is such that return the minimum largest sum. Okay, okay. Minimized largest sum. So largest sum क्या होगा? यहाँ पे 7914.
एंड मिनिमाइज्ड लार्जेस्ट सम का क्या मतलब हुआ? मतलब हमें के सब एरेज में डिवाइड करना है और जिस भी सब एरे का सम लार्जेस्ट हो उसको रिटर्न करना है। इज इट द थिंग? और इसको कैसे करेंगे हम? मैंने वीएस कोड में तो कोई भी कोड ही नहीं लिखा है 2 दिन से। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं मिनिमम लिखे वाले प्रॉब्लम की। So, okay, here is our VS Code, and let's paste it transfer. It is fine, and we will try to run it later. Now we are doing some other problem. Other problem's name is क्या है प्रॉब्लम? स्प्लिट एरे। स्प्लिट एरे largest sum about Java. Okay, this is right. Um, इसका आंसर स्पेस क्या होगा? um, there are 4 ways to split numbers into two subarrays. The best way is to split into 7, 2, and 5, and 10 in 18, where the largest sum among the two subarrays can be 18. 4 ways कैसे हो सकते थे? या तो 7 और 2 को, अच्छा ठीक है, हाँ, हमें लार्जेस्ट मतलब मिनिमाइज करना है लार्जेस्ट सम को। तो ठीक है, अगर 7 और 2 और 5, 10 और 18 को अगर हम सब एरे बनाते तो इट वुड हैव बिकम 23। जो हमारा जो आंसर होता वो 23 होता। लेकिन अगर हम 7, 2 एंड 5 को अलग करें, 10 और 18 को अलग करें, ओके ठीक है। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि सारे सब एरेज को कंपेयर करेंगे। ओके, now I got the point to why this problem exists. Okay, in
How will we get the answer space in this? I should wear my specs now. Mm, we need to return the nearest largest district. Need to think about it. Let me drink some water. I will be back in a minute. So I'm back now. I'm back again. I'm back. I don't want to start fucking hands. Hmm. First of all, we need to get the search space. So the answer space will be
Today's 18th of September. It has become it's not invisible. Mm,
Hey guys, welcome to our live stream. We have solved only two problems yet to do. It. So minimum days to make buckets is already done. Split array, largest sum is also done. We need to do these two other remaining four problems as well. So how are you guys? Still awake? सोए नहीं अभी तक? If you are someone who know me, you can you should like put a message in the live chat, right? Will you stay if I solve one more problem? Then I will solve one more problem. Which problem should we solve next? Mm. Ayush Singhal, welcome back, bro. How are you? After a long time, you are in our stream. Which problem will we solve next? Your options are, what are the options? Painter's problem, aggressive cow, book allocation. Painter's problem, book allocation, allocation problem, or aggressive cow problem. I could not see the message. Hi आयुष, कोई कमेंट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करूँ सॉल्व, बंद कर दूं स्ट्रीम? कोई देख रहा है? Which problem should we solve next? Uh, guys, ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ. हम करेंगे aggressive cow वाला problem. Let us solve that aggressive cow.
Sorry, guys. You were not responding to my comment. जल्दी से लाइव चैट में बताओ कौन सा प्रॉब्लम करना है अब। देख रहा है कोई? मुझे किसी का मैसेज क्यों नहीं दिख रहा लाइव चैट में? कितना अनोनिमस रहते हो यार, अब तो थोड़ा लाइक। मैं इतना शाय हुआ करता था, मैं अभी पब्लिकली इतना बकबक कर रहा हूँ। तुम लोग एटलीस्ट एक कमेंट तो कर ही सकते हो, कोई नहीं देखने वाला तुम्हारा कमेंट, डिलीट कर देना बाद में। अभी बताओ कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। पेंटर्स प्रॉब्लम, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, एग्रेसिव काउ प्रॉब्लम। बी ब्रेव को। जैसे अभी किसी ने कर दिया। विशाल मौर्य, आर यू देयर ब्रो? There are three people watching us continuously but not commenting. Let me choose the problem myself. We will solve the aggressive car problem. Let's get back to the driver's sheet and go to the problem number next. Remaining problems. Aggressive cows. Aggressive cows क्या करती है? Problem statement is you are given an array ARR of size n. mm, Given an array of size n which denotes the position of stalls. You are also given an integer k which denotes the number of aggressive cows. ठीक है, k aggressive cows हैं. You are given the task of assigning stalls to k cows such that the minimum distance between any two of them is the maximum possible. मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया प्रॉब्लम। लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, the maximum possible minimum distance between any two cows will be 3 when 4 cows are placed at position. ठीक है, here's the distance between cows are 3, 4, 3 respectively. We cannot make the minimum distance greater than 3 in any ways. Okay.
You are given an array ARR of size n which denotes the position of stalls. Stalls क्या है भाई? चलो ठीक है, array given है जिसका size n है, ठीक है. Position of stalls given है 0 3 7 10 9. ओके, ठीक है. और you are also given integer k. k क्या डिनोट कर रहा है? Which denotes the number of aggressive cow. मतलब हमारे पास चार aggressive cows हैं. You are given the task to assign stall k cows such that the minimum distance between any two of them is the maximum possible. मतलब कि जितने भी एग्रेसिव काउस है ना उनका डिस्टेंस आपस में मैक्सिमम होना चाहिए एंड दे शुड फिट इन द स्टॉल. सो इट विल बी 3 7 10. ओके. Just do it. This graph looks amazing. Yeah. Guys. Yes. Okay, let's get back to the work. Enough of this. Yeah, baby. Update the सामने. Okay, we're back and we will solve the aggressive cow problems. किसी ने कमेंट ही नहीं किया था. How? But yeah. uh, So we need to maximize the distance. Okay.
Okay. The Let's see the example number two. Input format is n equals to 5. That is the number of stalls. K is the number of aggressive cows. We need to maximize the distance between the two aggressive cows, and that can be the first and last. It will be first and last. Okay. If k is equals to 2, then we will give first and last as answer. Why? अच्छा इनको sort करना पड़ेगा and these are the result is 5. How? अच्छा we need to find the maximum distance. Find the maximum possible minimum distance. Maximum possible minimum distance. Maximum possible minimum distance. Okay. Between the two arrays. In this first example, the maximum possible minimum distance is 3. And in this, so अच्छा ठीक है. So the answer space will be from the smallest of the array to the largest of the array. ठीक है. Hmm, aggressive cows problem. Book allocation problem and aggressive cows. I am tired now. Hmm, where can I find the problem? SPOJ, aggressive cow. What does that SPOJ means? And it is also not available here.
दिमाग काम नहीं बचा है। हेलो आयुष। हेलो। आर यू देयर? आयुष सिंघल। Let's join the Discord server. We will talk there. Hmm, on a voice chat. I am going to end the stream in few minutes. Or should I solve more problems? Oh, Vishal Maurya, you were there? मुझे तो लगा तुम चले गए. Thank you so much, bro, for staying too long and checking out. Good night. Have sweet dreams. And Ayush Singhal, are you there? और भी प्रॉब्लम सॉल्व करें या सो जाएं? आंखों में इरिटेशन होने लगा है थोड़ा. That is why I'm thinking that I should quit this stream. Good night, Vishal. Thank you so much. Okay, buddy. आज के लिए इतना काफी है. कल से थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे. Like around 8:30. Hey Vishal, are you there? Tell me what's the best time to start our stream. मेरा भी डाउट क्लियर करते जाओ यार. Whoever is watching, tell me which is the right time to stream. Start the stream and what do you guys prefer? When should I start my stream? At 8:30 or at 9:30 or at 10:30? भाग्य सभी के सभी. कान में दर्द हो जाता है यार. बल्ब लगाए लगाओ. So guys, I am ending the stream now. See you tomorrow and we will try to complete this binary search wala funda. I need to study more before starting the stream. We could solve only two problems out of
eight that we were trying to solve today. Okay, we have solved three. No, two only. Book allocation and aggressive cow are remaining. I think I should solve these two problems here. Then I will see. It's too early. It's too early. अच्छा रहने देते हैं यार. No one is there. So let's end the stream. Thank you so much, guys, for watching. See you guys tomorrow. Keep on thriving. Think or thrive together. Stay tuned for the next stream. Good night. Sweet dreams. Take care. Bye bye. Well, wow.